Hello everyone, welcome to the Doctor's Dictionary, an episode on pregnancy diet. क्या आप भी प्रेगनेंसी में अपने डाइट से रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं? We have with us today Dr. Pooja Arora. She is a doctor and consulting nutritionist जो हमारी इन सभी प्रेगनेंसी डाइट रिलेटेड इश्यूज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी. डॉक्टर पूजा, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो. मेरा पहला सवाल अब आपसे ये रहेगा. नाउ दीज क्वेश्चंस वी हैव सिलेक्टेड ऑन जनता की डिमांड. व्हाटएवर पॉपुलर क्वेश्चंस आवर ऑडियंसेस हैव, वी मेक इट अ लिस्ट एंड आस्क आवर डॉक्टर्स. तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी डाइट वुड बी, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट अ प्रेग्नेंट वुमन फेसेस इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल्स. किसी फीमेल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, किसी के लिए थोड़ा स्मूथ रहता है, बट मोर और लेस ये सिम्टम्स आते ही हैं. एंड बाय मॉर्निंग सिकनेस वी मीन सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, फीलिंग वेरी लो इन द मॉर्निंग. ये क्यों होता है? नॉर्मली जैसे ही बेबी कंसीव होता है और बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, तब ब्लड में से, मदर के ब्लड में से ग्लूकोज बेबी की तरफ ज़्यादा फ्लो होता है. सो मदर्स बॉडी लैक्स ग्लूकोज एंड दीज आर द साइंस ऑफ लैक ऑफ ग्लूकोज. जो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है या लो एनर्जी फीलिंग आ रहा है मॉर्निंग में स्पेशली, बिकॉज थ्रू आउट द नाइट मदर इज इन द फास्टेड स्टेट, वो कुछ खा नहीं रही है. तो मॉर्निंग में ड्यू टू लेस ग्लूकोज इन द ब्लड मदर फेसेस दीज सिम्टम्स. बट द गुड न्यूज इज कि सेकेंड ट्राइमेस्टर आते ही ये सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं. मैम, लिसनिंग टू ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स, आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगी टू ऑल द वुड बी मम्स हु आर वाचिंग आवर शो राइट नाउ? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ये जो मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स हैं, इसको थोड़ा ईज कर सके उसके लिए के कुछ रेमेडीज हैं विच अ प्रेग्नेंट वुमन शुड बी फॉलोइंग. एज सून एज अ वुमन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, she should be having a carbohydrate rich snack in the bed itself even before brushing the teeth. जैसे ही आप उठे हैं, आप उसी वक्त कोई भी रिच कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक लड्डू है या गुड़ का चिक्की है, इस तरह के स्नैक अपने बेड साइड पे ही रखिए. उठते ही सबसे पहले ये खाइए एंड देन रिमेन इन द बेड फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes. देन यू गेट अप सो दैट इस टाइम में आपके ग्लूकोज लेवल्स थोड़े से नॉर्मल हो जाए. Only then you wake up and go and brush your teeth. This will definitely help you a bit for your morning sickness के symptoms. इसके अलावा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम है, तब जनरली हम लोग 3 meals in a day लेते होते हैं, like breakfast, lunch and dinner. But when a woman gets pregnant, it's recommended that she should be having small and frequent meals. So instead of having 3 meals, she should be consuming 6 meals in a day, but a smaller one. And the foods that are easy to digest, that are not very hard on digestion. Generally fast food, fried food, बहुत heavy food ये avoid करना चाहिए. Female should stay hydrated well, but make sure जैसे ही आप उठे हैं उसी वक्त पे आप liquids ना पिए, उस वक्त पे carbohydrate rich food ले, and then later on you can keep on sipping your liquids. 2 meals के बीच में water intake adequate रखें. And folate is a nutrient which is very important during the first trimester of pregnant women. Folic acid के supplements तो आपके gynecologist prescribe करते ही हैं, but make sure that you're consuming folate through your diet as well. And you get folate from whole grains, green leafy vegetables and fruits. So make sure you're adding these in part of your daily diet. Ma'am, it is often said that the second trimester for a pregnant woman would be easy breezy kind of. So is it really true? क्या वाकई में सभी के लिए easy breezy रहता है या it's a roller coaster ride? So of course second trimester आते आते जो morning sickness वाले symptoms हैं वो काफ़ी ease out हो जाते हैं. But yeah, pregnancy can be a roller coaster ride. Not all days are same. Some days might be good and some days might not be. सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स जनरली पाए जाते हैं वो ब्लोटिंग के, वाटर रिटेंशन के एंड कॉन्स्टिपेशन के पाए जाते हैं.
ये ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर होते होते जनरली हंगर इंक्रीजेस इन प्रेग्नेंट वुमेन and generally what she hears is now she should be eating more calories, she should be eating more food for the baby. तो कई बार प्रेग्नेंट वुमेन ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स लाइक शी क्रेव्स फॉर दैट कैन बी जंक वो सब इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं. इस रीजन की वजह से भी ब्लोटिंग इश्यूज ज्यादा होने लग जाते हैं. Ma'am, what are the diet? What are all the diets that should be included in the second trimester for a pregnant woman? सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं ये ज़्यादा हैरेस न करे मदर को. उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अ मदर कंज्यूम्स होलसम फूड दैट इज प्रिपेयर्ड एट होम. और जो एक्स्ट्रा सोडियम एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट वाले फूड हैं जनरली जो पैकेज्ड फूड्स हैं उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. ना ही पैकेज्ड फूड्स दे आर हाई इन सोडियम बट दे ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. दे contain hidden sugars in them which may lead to unnecessary weight gain during the second trimester, which can invite many other diseases related to pregnancy. So it's always advisable to avoid outside food, packaged food that will help you with your bloating issues. Plus you should be consuming a lot of fiber rich food to avoid constipation during this stage. So a diet that is wholesome, that includes all the major nutrients like complex carbohydrates, proteins, good fats, minerals, vitamins from lots of fruits and vegetables should be included. Second trimester में जो essential nutrients हैं वो iron, calcium and proteins हैं. Generally gynecologist इस trimester में iron and calcium के supplements देते ही हैं. But female should be consuming the food that is rich in iron because इस trimester से blood flow towards the baby increases. So it's important that you consume iron-rich food and you get iron from nuts, fruits. You get iron from anjeer, khajur, green leafy vegetables, whole grains, fruits. So it's important that you include these foods in your diet. Calcium is also an important nutrient during this stage. Babies के bones इस age में grow कर रहे होते हैं और इस टाइम पे अगर कैल्शियम कम कंज्यूम किया जाए तो बेबी may suffer from certain diseases like even heart diseases in the later stages of life. And you get good amount of calcium from milk and milk products. Apart from that, sesame seeds, ragi, methi and many other vegetables are also good sources of calcium. It's also very important to consume protein during this stage because a baby is growing, babies के tissues, muscles भी form हो रहे होते हैं. So again, pulses, legumes, milk and milk products are good sources of protein which should be included during this trimester. And let's talk about the third and the final trimester. What are the symptoms that a pregnant woman faces in her final lap? Third trimester is the time when the size of the uterus becomes really large because the baby is growing. And due to the increase in the size of uterus, a mother suffers from certain symptoms like heartburn, shortness of breath, backache, frequent urination, and she develops problem while sleeping as well. हार्टबर्न जनरली इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है एंड वो स्टमक के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है. सो व्हाटएवर फूड शी इज कंज्यूमिंग डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है एंड फूड रिफ्लक्स होने लगता है. सेकेंड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का अर्ज होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज बिकॉज अगेन यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा होता है और वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है. सो अ वुमन फील्स एन अर्ज ऑफ पासिंग द यूरिन अगेन एंड अगेन. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होने लगता है बिकॉज अगेन यूट्रस ग्रो होने की वजह से लंग्स पर भी प्रेशर पड़ता है एंड ओवरऑल साइज ऑफ मदर ऑल्सो इंक्रीजेज. दैट्स द रीज़न थोड़ा भी एक्टिविटी करने पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होने लगता है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स फाइनली स्लीपिंग में भी मदर को प्रॉब्लम होने लगता है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स सफर्ड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. What all diet should comprise of when a woman is in her final trimester? So third trimester is the time जब ये सारे symptoms से mother पास हो रही होती है तब it's recommended that food intake again जैसा कि first trimester में कहा गया था small meals but frequent meals to avoid heartburns and to make the digestion process very smooth. Food भी light होना चाहिए.
and avoid fried foods, heavier foods. जनरली बोला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर है तो हेवी फूड कंज्यूम करो सो दैट बेबी का वेट अच्छा हो जाए, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. A mother should be given the food which is easily digestible. Plus, every meal के बाद you should walk for at least 10-15 minutes. That will keep you active and that will help you with the process of digestion. Avoid laying down immediately after your meals. Sleeping में problem होता है, उसके लिए you can purchase certain pillows that will help you support your womb, support your uterus, that will help you in sleeping. Also, warm showers before sleeping helps you develop good sleep during nights. These things may help you. And backache का जो issue होता है वो भी again excess of weight gain की वजह से हो जाता है. Plus मदर का posture कई बार सही ना रहने की वजह से भी backache के issues हो जाते हैं. So it's important that you consult your doctor and understand your correct postures to avoid backaches. And it is said that a pregnant woman, when she is in her last trimester, should take ample amount of rest, like bed rest sort of something. So is it really true, or she should be active in her final trimester also? जैसे ही लेडी कंसीव्स अ प्रेगनेंसी सब लोग बोलने लगते हैं कि अब आप 2 हो सो यू शुड बी ईटिंग फॉर 2, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू. एक्चुअली इंडिया में जो भी सारा लव है वो फूड के थ्रू ही डिस्क्राइब किया जाता है. दैट इज़ द रीज़न कि फूड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. फूड इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, बट ईटिंग फॉर 2 इज़ नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू इंक्रीज योर कैलोरी इनटेक. आप जितना कैलोरीज पहले ले रहे थे ऑलमोस्ट उतना ही कैलोरीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेंगे. दैट वुड बी एडिक्वेट बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी इज़ वेरी 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 स्मॉल. इनिशियली तो इतना टाइनी का सैक होता है एंड देन द बेबी ग्रोज, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में द बेबी इज़ वेरी स्मॉल एंड बेबी डज नॉट नीड extra calories during this phase. Second trimester आते आते you should be consuming 300, approximately 300 more calories than what you were consuming before the pregnancy. And then last trimester आते आते more 300 to 400 calories as compared to the second trimester. ये ratio से आपको अपना calories increase करना है. So no extra calories in the first trimester, 300 to 400 extra calories in the second trimester, and then again 300 to 400 more calories in the third trimester. That's it. अगर आपका weight excessively gain हो जाता है during pregnancy, it can invite to many diseases like आपको gestational diabetes हो सकता है, आपको blood pressure raise हो सकता है, which can be very complicated for the birth of the baby. So avoid consuming extra calories. आप ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज इंक्लूड करने वाले हैं वो भी यू मेक श्योर दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेंस फूड एंड नॉट फ्रॉम द फास्ट फूड, नॉट फ्रॉम द जंक फूड. सो मेक श्योर योर कैलोरीज आर वर्दी इनफ टू नरिश यू एंड योर बेबी. If you are a good listener and would like to have knowledge on the go while exercising, eating, jogging, running, whatever, do subscribe to our Google podcast and Spotify, The Doctor's Dictionary.